Good morning, all of you. So in previous जो हमने previous days में पढ़ा है, किसी की कोई query है? If there is any queries in previous topics? No. Okay. So what we have to discuss as what we have to do, we can go ahead after that concept जो हमने कल पढ़ा था, ठीक है ना? कल जो हमने पढ़ा था उसी से हमें आज आगे समझना है, ठीक है? और then we can proceed for something. Then we can proceed for something. Abhilasha, I'm not provide these things basically. So you can, for that, you can talk to the management person. Okay. Okay, Abhilasha. If you have any queries, you can directly talk with the management. They will provide you maybe a recording. Okay. So now we can begin with the concept now. Got it? So how we can begin? अगर आपको याद हो तो हम लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था उसी से हमें आज आगे समझना है, ठीक है ना? If you remember, in last class we are discussing about some concept, and that concept is what? So now we have to start with the concept now. So now, if you remember that in tomorrow's section we are discussing about some concept, and that concept basically we can discuss is concept regarding, I think,
I think we are discussing this concept in last class. Yes or no? We are discussing about the concept of string handling. यानी हम लोग स्ट्रिंग हैंडलिंग के बारे में समझ रहे थे कि हाउ द स्ट्रिंग हैंडलिंग व्हेन वी आर यूजिंग द लिटरल कॉन्सेप्ट एंड देन वी आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू कीवर्ड, कि अगर हम न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं तो हमेशा ऑब्जेक्ट क्रिएशन होता है, बट अगर हम यूज करते हैं लिटरल तो ऑब्जेक्ट तभी क्रिएट होता है इफ दैट इज अ यूनिक इन स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। ठीक है ना। अब क्वेश्चन आता है कि हाउ वी कैन प्रोसीड विद दिस। अब इसके अलावा और क्या क्या चीजें होती हैं आपकी स्ट्रिंग के अंदर, तो उन्हीं कॉन्सेप्ट को हमें और आगे चल के समझना है एंड देन वी हैव टू स्टार्ट द वर्किंग। तो नाउ देयर इज वन फंक्शन, और अंडरस्टैंड करना है यहाँ पे एक पॉइंट समझने के लिए। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट s डॉट इक्वल्स व्हाट, ये किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू s1 एंड वी कैन आल्सो डू द वर्क इज copy and paste s। clear? So we have a two thing, s dot equals and s1 dot equals, okay, then s2 dot equals and s3। so what the problem is this कि हम कैसे इस पे काम कर सकते हैं। got it? तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वल, इक्वल्स होता क्या है। तो एक सिंपल सा वर्ड ध्यान रखना है, equals is from object class। और इक्वल्स होता है किसका किसका फंक्शन होता है, यानी इक्वल्स इज फ्रॉम ऑब्जेक्ट क्लास, यानी जो हमारा इक्वल्स फंक्शन है वो ऑब्जेक्ट क्लास का फंक्शन है। और आपको मैंने कल एक बात बताई थी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वही क्या होता है, सुपर क्लास होता है। यानी हर क्लास की सुपर क्लास कौन सी क्लास है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्लास है। सभी क्लास की सुपर क्लास कौन सी क्लास है, ऑब्जेक्ट क्लास है। So that's what we have to understand कि equals is from object class। Then question आता है कि how the things is different, how the things is actually different। तो now अब क्या होता है कि हमें पता है कि स्ट्रिंग क्लास ने भी ऑब्जेक्ट क्लास को क्या किया, इनहेरिट किया है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना है कि जो इक्वल फंक्शन है ये स्ट्रिंग क्लास ने ओवरराइड किया है। क्या किया है, स्ट्रिंग क्लास ने इक्वल फंक्शन को क्या किया है, ओवरराइड किया है। ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर ये फंक्शन चेक करता है रेफरेंस, यानी क्या दोनों सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, इफ यस इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। बट स्ट्रिंग क्लास के अंदर जो इक्वल फंक्शन है वो ये काम नहीं करता है। स्ट्रिंग क्लास के अंदर का फंक्शन डूइंग द वर्क इज, तो सिंपली हम कह सकते हैं your string class override the function of object class equals। instead of comparing the references, now it will instead of comparing the reference it will compare the values। यानी जो काम इक्वल्स करता था ऑब्जेक्ट क्लास में वो काम ना करके यहाँ पे डिफरेंट वर्क करता है। और डिफरेंट वर्क क्या करता है, इट विल कंपेयर द वैल्यू ऑफ अ स्ट्रिंग, यानी ये वैल्यू को कंपेयर करता है ना कि कंपेयर करता है रेफरेंस को। तो यहाँ पे अगर आप वैल्यूज दोनों कंपेयर करोगे तो आउटपुट क्या आएगा, ये वैल्यू ट्रू होगी या फॉल्स होगी, दोनों आउटपुट हमें क्या मिलेंगे, ट्रू मिलेंगे। क्यों ट्रू मिलेंगे, बिकॉज अब हम रेफरेंस कंपेयर नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना। और एक चीज और ध्यान रखना है, इक्वल फंक्शन को सिर्फ स्ट्रिंग क्लास ने ओवरराइड किया है, बाकी लगभग इसे कहीं ओवरराइड नहीं किया गया है। गॉट इट? तो यहां पे हमें क्या मिलेगा,
you can get a true. Why? Because your string object need to be compared. जैसे ही हम इसे कंपेयर करेंगे, you can value. तो पहले दोनों ट्रू फॉल्स आए, क्यों? क्योंकि हमारे पास वहां पे कुछ कॉन्सेप्ट वैसा था, और फिर हमें क्या मिल गया, कुछ ऐसा मिल गया. क्लियर? दिस पॉइंट इज क्लियर फॉर एवरीवन कि व्हाई वी आर सेइंग दिस इज इंपॉर्टेंट. देखो, यहाँ इक्वल फंक्शन को हमने ओवरराइड किया, और जैसे इक्वल फंक्शन ओवरराइड हुआ, उसने अपनी डेफिनेशन चेंज की. यानी स्ट्रिंग क्लास में डेफिनेशन क्या हो गई? स्ट्रिंग क्लास में डेफिनेशन ये हो गई कि नाउ यू हैव नॉट नीड टू कंपेयर द रेफरेंस, यू नीड टू कंपेयर द वैल्यूज. जब हम वैल्यू कंपेयर करते हैं तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे क्या मिलता है, वी कैन गेट अ ट्रू. अब समझने के लिए देखो, अगर मैं आपसे कहूं वी हैव अनदर थिंग्स, अनदर स्ट्रिंग समथिंग लाइक दिस S4, और यहाँ पे हम अगर लिखते हैं वी कैन राइट लाइक द वेलकम, एंड इफ यू कैन राइट लाइक दिस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, S4 dot equals S3. Now tell me, it's a true or false, everyone? ट्रू होगा या फॉल्स होगा? फॉल्स. Why, Saket, that is a false? Why that is a false? ये false क्यों होगा? Case sensitivity. तो मन में क्वेश्चन आता है, तो मन में क्या आता है, एक क्वेश्चन आता है. क्या क्वेश्चन होता है कि हाउ वी कैन गेट दैट एज अ ट्रू. तो उसके लिए फंक्शन दिया गया ना, पहले मैं रन करा के दिखा दूं, देन यू कैन अंडरस्टैंड. फॉल्स मिल गया, बट आप चाहते ट्रू में, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और होता है जिसे बोलते हैं इग्नोर केस. क्या होता है? इग्नोर केस. राइट क्लिक, रन. गॉट इट? तो इग्नोर केस ने क्या किया, वो केस सेंसिटिविटी को रिमूव कर दिया. ठीक है ना? तो अगर आपको कुछ ऐसा करना है तो यू कैन डू दिस ऑल्सो. नाउ इफ आई डू द वर्क इज दिस, अगर मैं ये करता हूं, समझना, s1 डॉट concat welcome in Delhi, and we want to print it the system dot out dot println, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, वी कैन राइट द s. Now tell me, what is the output? Yes, अब आउटपुट क्या होगा? What is the value of s1? Okay,
वेलकम इन दिल्ली, वेलकम इन दिल्ली। ओके नाउ, अच्छा सभी से मैंने कल एक डिस्कशन किया था कि जो हमारा स्ट्रिंग है वो किस टाइप का ऑब्जेक्ट है। स्ट्रिंग इज विच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, इट्स अ म्यूटेबल और इम्यूटेबल। इम्यूट, तो इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है? चेंजेस नॉट हैपन इन द सेम ऑब्जेक्ट, यानी कभी भी चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है ना? सो दैट्स वी हैव टू अंडरस्टैंड। देखो इम्यूटेबिलिटी का मतलब बोला गया था कभी भी उस ऑब्जेक्ट में कोई चेंजेस नहीं, ठीक है ना? तो सी देयर, अगर आप S1 प्रिंट करोगे एक्चुअली यू कैन गेट द S1 इज दिल्ली। आपके मन में आ रहा होगा सर एक्चुअल में ये काम कैसे कर रहे हैं। चलो मैं उस चीज को एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझना। देखो जैसे कि इफ आई कैन से दैट कि अगर हम यहाँ पे एक काम करते हैं, वी कैन जस्ट जनरेट द एनोटेशन, समझना है आपको। सपोज दैट इज योर मेमोरी ब्लॉक, ये आपका एक मेमोरी ब्लॉक था, ठीक है ना? ये क्या था? आपका एक मेमोरी ब्लॉक था। इस मेमोरी ब्लॉक के अंदर आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, किस नेम से? यू हैव क्रिएटेड वन ऑब्जेक्ट विद द नेम ऑफ वेलकम। किस नेम से? वेलकम नेम से। और समथिंग लाइक दिस। और फिर आपने मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट और क्रिएट किया, व्हेन यू डूइंग द वर्क इज एस कॉम, और उसे पॉइंट कौन कर रहा था? एस वन। फिर आपने क्या काम किया? कॉन्कैटनेशन किया, और कॉन्कैटनेशन से क्या काम किया? कुछ ऐसा काम किया, एंड दैट इज व्हाट वेलकम इन दिल्ली। ओके, देखो अब हो क्या रहा है, एस वन आ गया यहाँ पे और ये आ गया यहाँ पे। तो ना जैसे ही हम यहाँ पे बात करते हैं सिस्टम, बट एक बात बताना, क्या इसके पास, देखो ऑब्जेक्ट यही था, इसका यूज करके एक ऑब्जेक्ट बन गया। क्यों? क्योंकि इसको इस ऑब्जेक्ट में कोई चेंजेस नहीं होंगे। क्यों? पहली चीज क्योंकि इसके पास एस है, और दूसरा एक और वेरिएबल है दैट इज S1 एस, एंड दोनों पॉइंट किसे कर रहे हैं? बोथ आर पॉइंटिंग टू द सेम ऑब्जेक्ट, दोनों एक ही ऑब्जेक्ट पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है ना? दोनों इसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। बट अगर मैंने कहा कि आपने जैसे ही सेकेंड स्टेटमेंट यानी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की, विच वन? दिस, तो आपका ये ऑब्जेक्ट तो मेमोरी में आ गया, बट क्या आपने उसे रेफरेंस दिया है कोई? नहीं। एंड दैट्स व्हाई जब आप इसे रन करा रहे हो, यू कैन गेट अ व्हाट? यू आर स्टिल गेटिंग द वेलकम। सीधे व्हाट वी आर गेटिंग? वी आर गेटिंग द वेलकम। वेलकम का मतलब क्या हुआ? हमने रेफरेंस, इसलिए बोलते हैं कि स्ट्रिंग इज एन इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। Why it will be immutable? Because more than one reference pointing to the same object. So it's not a visual or good. It's not visual or good to make the change a value. तो कुछ ऐसे समझना, जैसे आप 8 10 लोग एक ही जगह को पॉइंट करते हो, तो ऐसा तो नहीं है ना कि हम उसे चेंज कर दें। अगर चेंज कर देंगे तो रिफ्लेक्ट तो सभी को होगा। तो दैट से उस ऑब्जेक्ट में कभी भी कोई चेंज फॉर्म नहीं किया जाता। हमेशा क्या होता है, जब भी आप कोई नया चेंज फॉर्म करते हो, इट विल ऑलवेज क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट। तो जैसे ही हमने कॉन्कैटिनेशन किया, अ न्यू ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। बट अब प्रॉब्लम क्या है?
वी आर नॉट गेटिंग एनी रेफरेंस, यानी इसके पास अभी कोई रेफरेंस नहीं है कि कैसे हम इसको कॉल करें। दैट्स वाई आपको एस1 में अभी भी क्या मिल रहा है, वी आर गेटिंग अ वेलकम। तो उसके लिए क्या करना होगा, यू हैव टू डू दिस S1 इक्वल टू दिस। अब ऑब्जेक्ट बनाओ और S1 से कहा गया, अब आपको इसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना है। सीधे क्लियर। साकेत इस पॉइंट को ऐसे समझ सकते हो, मैंने कहा समझना, मैंने कहा यू आर लिविंग इन वन हॉस्टल रूम, आप एक हॉस्टल में रहते हो, ठीक है ना। आपको लगा कि ये हॉस्टल मेरे लिए अच्छा नहीं है, इट्स नॉट अ गुड वन, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, आपने कहा चलो हम एक काम करते हैं, एक नया हॉस्टल अच्छा ढूंढ के आते हैं, और यू गो एंड यू कैन सर्च एंड देन यू कैन फाइंड इट। आपको एक हॉस्टल अच्छा मिल भी गया, ठीक है ना। मिला है, ध्यान रखना, अभी आप शिफ्ट नहीं हुए हो, तो क्या आपका एड्रेस चेंज हो गया ताकि, नहीं। एड्रेस कब चेंज होगा, जब आप उसके रेफरेंस को गेट करोगे। तो रेफरेंस गेट कब होता है, व्हेन वी आर डूइंग दिस ऑब्जेक्ट। देखो, हॉस्टल मिल गया और फिर मैं उसमें शिफ्ट हो गया, दैट इज अ कॉन्सेप्ट इज assigning the addressing point। क्लियर। ओके, अब कुछ और चीजें होती हैं जिसके भी पे हमें काम करना है, एंड हाउ वी आर गोइंग टू डू द वर्क दैट वी कैन डिस्कस लेटर ऑन। ओके, so these 3 points clear for everyone now। next is what we have to do the work। आखिर इसके अंदर हमें एक और फंक्शन होता है, हम जिसे बोलते हैं S1 कॉपी दिस, सब लोग बहुत अच्छे से समझना। I call the function is S1 dot length। S1 dot length, tell me what is the length of this string, what is the length of this string। Yes, any queries? 18, 17, 16। Now understand that कि what is the meaning of this। देखो, वेलकम में कितने कैरेक्टर्स हैं, 7, then one space that is 8, then plus 2, 10, then again a space, so 7 plus 1, 8 plus 2, 10 plus 11 plus 5, how many characters are there, 16। 16 तो ये हुआ, फिर हमने यहाँ पे 3 स्पेसेस दिए हैं, 16 प्लस 3 स्पेसेस, ब्लैंक स्पेसेस, जिसे हम बोलते हैं
90, तो हमारा लेंथ कितना आ जाएगा, यू कैन गेट लेंथ इज 9। इससे हमेशा ध्यान रखना है, स्पेस इज ऑल्सो अ कैरेक्टर, स्पेस इज ऑल्सो अ कैरेक्टर, यानी जो स्पेस होता है वो भी हमारा क्या है, कैरेक्टर। तो यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रिंग, यू ऑलवेज नीड टू रिमेम्बर दैट कि जो हमारा स्पेस होता है वो भी क्या होता है, एक कैरेक्टर होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे उसे चेक कर लिया। नाउ द नेक्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू डिस्कस, जब लेंथ मिल गया तो हमें आगे चल के काम कैसे करना है, दैट वी हैव टू सी देयर। देखो s1 डॉट लेंथ, अब इससे हमें लेंथ मिलता है। अगर आपसे कोई कहे, अब चलो एक नया क्वेश्चन, उसका आंसर बताना आप लोग। s1 डॉट ट्रिम डॉट, आप नॉर्मली गेस कर सकते हो, और मैंने जब आई थिंक स्पेस दिया तो आपको बताते हुए स्पेस दिया था कि आई एम प्रोवाइडिंग द 3 स्पेसेस देयर। ओके, now what is the length if I am using the s1 dot trim concept? अच्छा, ट्रिम के बारे में कितने लोगों को पता है, हाउ मेनी पीपल अवेयर अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिम? देखो ट्रिम का मतलब मैं समझो से बता रहा हूँ, समझना बहुत अच्छे से। ट्रिम का मतलब होता है टू रिमूव द स्पेस फ्रॉम लास्ट एंड फर्स्ट, ऑल ब्लैंक स्पेसेस, यानी स्ट्रिंग के पहले और स्ट्रिंग के बाद जो भी स्पेसेस होंगे वो हटा दिए जाएंगे। कभी भी बिटवीन स्पेसेस को रिमूव नहीं किया जाता है, ध्यान रखना। हम क्या काम नहीं करते हैं, कभी भी हम बिटवीन की स्पेसेस को रिमूव नहीं करते। तो हमें पता है सिर्फ ब्लैंक स्पेसेस यहाँ पे 3 है, जो कि एंड ऑफ द स्ट्रिंग, स्टार्टिंग ऑफ द स्ट्रिंग नहीं है, तो दैट्स वी कैन डू द वर्क इज रन अगेन रन। क्लियर एवरीवन? ठीक है ना? सो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे ट्रिम फंक्शन का। ट्रिम क्या करता है, रिमूव करता है। नाउ आफ्टर दैट इफ यू वांट टू गेट समथिंग मोर, you can use the concept like this. और यहां हम क्या यूज करेंगे, अगेन s1 डॉट char add, और यहां पास कर दिया age, right? s1 डॉट char add, ठीक है ना? अब इस सिनारियो में क्या होता है कि कैसे हमें काम करना है, हाउ वी हैव टू डू दैट। क्लियर? तो देखो s1 डॉट कैरेट जैसे ही आप करते हो वैसे क्या काम करते हो, यहाँ पे s1 डॉट कैरेट, इसका मतलब किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है वो मिल जाएगा, वेलकम विथ स्पेस। ओके, क्या हेड का काम होता है, वी कैन गेट व्हाट द रिटर्न देयर, तो हमें यहाँ पे मिलेगा वी कैन गेट एज अ आई, सीधे वी कैन गेट अ आई।
ठीक है ना। क्यों मिलता है आई, द रीजन इज सेम, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 8th प्लेस पे ही वैल्यू। अब आप लोग सोच सर 8th प्लेस पे स्पेस होना चाहिए, नहीं। इंडेक्सिंग कितने से स्टार्ट होती है एनी लैंग्वेज, indexing is always start with 0, but the counting you always start with 1. So that's why what we can say when you're doing this work, a welcome contains 7 characters plus 1 space, that is 8. But हमें जब 8 index की वैल्यू चाहिए, that means we are talking about the 9th character, ठीक है ना। That's why हम यहाँ पे क्या मिलेगा, we can get the I, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम बाकी सारे काम कर सकते हैं। इसी तरीके से स्ट्रिंग में बहुत सारे फंक्शन दिए गए हैं जो आप यूज कर सकते हो और उसके बिहाफ पे कोई भी वर्किंग परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है ना। तो हम सारे कॉन्सेप्ट फोकस नहीं करेंगे, द रीजन बिहाइंड इट दिस, बिकॉज वी हैव टू मेनली फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एंड्रॉइड, ओके। तो अगर आपको कोई लगता है कि कोई फंक्शन जिसके बारे में आपको नहीं आइडिया है, तो वो हम कभी ना किसी टाइम पे वी कैन डिस्कस इट, बट राइट नाउ वी मस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि जितने भी फंक्शंस हम यूज करते हैं स्ट्रिंग के, वो सारे के सारे क्या हैं, वेरी यूजफुल। जैसे मैं एक और फंक्शन बता देता हूं आपको, नाउ दैट इज नोन एज हियर s1 डॉट सबस्ट्रिंग। चलो टेल मी व्हाट इज द आउटपुट इज नाउ, वेलकम वेल, यहाँ पे आपको मैसेज मिलेगा कम इन कैरी। थर्ड का मतलब क्या हुआ, सब स्ट्रिंग मींस थर्ड से स्टार्ट करना है, तो थर्ड वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 3, तो सी से स्टार्ट होगा। कहां तक जाना है ये हमने बताया नहीं है, तो इट मींस इट विल बी गो टू द एंड। ना अब आउटपुट क्या आएगा, दैट इज कम, क्योंकि 3 से स्टार्ट करना है, 7 पे एंड कर देना है। तो 7 मींस इज व्हाट, अ स्पेस पे, तो स्पेस का भी इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि लास्ट वैल्यू जो होती है, जैसे एक चीज हम जो जो स्टॉप कंडीशन इसे एक्सक्लूड किया जाता है, एक्सक्लूड मतलब इसे नहीं इंक्लूड करना है, और जो 3 होता है उसे इंक्लूड करना होता है, यानी स्टार्ट को इंक्लूड करना है और एंड को एक्सक्लूड करना है। नाउ यू कैन सी दैट। अच्छा बताओ आउटपुट क्या आएगा,
Yes, more. हेलो। नाउ सो बेसिकली जो लोग भी पाइथन का लॉजिक यहाँ लगा रहे हैं वो इसे भूल जाए। एज कर रहे हैं। क्लियर। तो एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, जनरेट एन एरर, क्योंकि ये पाइथन नहीं है। ठीक है ना। तो क्या चीज ध्यान रखना है, दिस इज नॉट द पाइथन। तो यहाँ पे निगेटिव इंडेक्स का कोई काम नहीं होता है। वाई? द रीजन यू अंडरस्टैंड। व्हाट इट? तो यहाँ पे ध्यान के रखना है कि जो जावा है, जावा में हम कभी भी 3, 0 दैट इज नॉट वर्क बेसिकली। क्योंकि अब तो कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। Question, the first value must be a lower side and second value must be a greater side. The first value is always a lower and second value must be a greater. Then it will be going to be work. So that's you have to remember that if you're doing any kind of work, how we can manage the things. तो ये हमारा वही रूल है। क्लियर सभी को? सब स्ट्रिंग ध्यान है? तो नाउ एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको पाइथन के कॉन्सेप्ट को इंक्लूड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? इसके लिए मैंने जावा में आपको एक रूल बताया था, जावा हैव बाउंड द थिंग, यानी कभी भी आप उसके बियॉन्ड की चीजों को एक्सेस नहीं कर सकते। और जावा में निगेटिव इंडेक्स का कोई कॉन्सेप्ट फिलहाल तो नहीं है, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ निगेटिव इंडेक्स। तो जब हमारे पास निगेटिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट नहीं है तो हम ये काम नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो ये हमारा काम होता है लाइक दिस। अब अगर आपके मन में एक क्वेश्चन आता है कि अगर हमें किसी स्ट्रिंग को एज अ ब्रेक करना है स्ट्रिंग फॉर्मेट, तो कैसे करते हैं? देखो मैं दिखा दे रहा हूँ। सिंपली आई कैन टेल यू द फंक्शन स्ट्रिंग एस ऑफ दिस इक्वल टू एस पी इक्वल टू, और हम क्या लिखेंगे, s1 डॉट स्प्लिट।
और स्प्लिट करेंगे किसके बिहाफ पे, स्पेस के बिहाफ पे, हमने स्प्लिट कर दिया। यानी हमने पूरी स्ट्रिंग को स्प्लिट कर दिया ऑन बिहाफ ऑफ द स्पेस। नाउ अगेन we can go there and we can write as what again, same thing we can use now। ये तो हुआ स्पेस के बिहाफ पे। इसके अलावा वहां पर कॉन्सेप्ट होता है char c of array equal to s1 dot to char array। यानी हमने स्ट्रिंग में नहीं ब्रेक किया, इसे ब्रेक किया किस फॉर्मेट में, इन फॉर्म ऑफ अ कैरेक्टर टाइप एरे। एक काम किया जिसमें हमने उसे ब्रेक किया इन फॉर्म ऑफ स्प्लिट, स्प्लिट से हमने उसे कन्वर्ट किया टू स्ट्रिंग टाइप एरे, और फिर हमने एक कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट किया टू कैर एरे, और उस कॉन्सेप्ट में हमने उसे इंप्लीमेंट स्प्लिट किया इन फॉर्म ऑफ विच टाइप, टू अ कैरेक्टर टाइप एरे। Now these points are clear for everyone। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं दैट इज नोन एज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिंग, और इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं दैट इज आल्सो नोन एज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिट, सॉरी इसी को हम बोलते हैं immutable hour, immutable object। in Java is a immutable object। यहाँ पे जो हम इसे बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं शैलो कंपैरिजन, शैलो, और इसे हम बोलते हैं दैट इज नोन एज द शैलो कंपैरिजन एंड डीप कंपैरिजन। Clear? That is known as the shallow comparison and deep comparison। ठीक है ना। अब क्वेश्चन आता है कि नाउ व्हाट द सेकंड कॉन्सेप्ट वी हैव टू लर्न। देखो सेकंड कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट जो होता है हम बोलते हैं वी कैन से अगेन, हमें पढ़ना है स्ट्रिंग बफर, और एक और चीज हम बोलते हैं स्ट्रिंग बिल्ड। ठीक है ना, ये दो कॉन्सेप्ट हमारे पास होते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि इसमें हमें पढ़ना क्या है या क्या पॉइंट समझना है। देखो बेसिकली दोनों जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं ये दोनों वो होते हैं म्यूटेबल टाइप के। कैसे होते हैं, बोथ आर द, रन कराऊंगा तो कुछ प्रिंट नहीं होगा किशन, आई कैन जस्ट टेल यू। मैंने इसे प्रिंट नहीं करा है तो दैट्स व्हाई इट विल बी नॉट प्रिंटेड। ठीक है, ठीक है ना, तो वो रन नहीं होगा क्योंकि उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि एक तो एरर है और दूसरा यहाँ पे हमने इन दोनों वैल्यूज को प्रिंट नहीं करा है। जब वैल्यूज प्रिंट नहीं करा है तो इट विल नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ रिजल्ट, दैट्स व्हाई। क्लियर किशन? ना अब क्वेश्चन आता है कि जो हमारा स्ट्रिंग बफर होता है और जो हमारा स्ट्रिंग बिल्डर होता है, बोथ आर द म्यूटेबल टाइप ऑब्जेक्ट। दोनों कैसे ऑब्जेक्ट हैं, म्यूटेबल टाइप। ना तो बहुत से लोगों के हमने क्वेश्चन होगा कि सर स्ट्रिंग तो हमारा इम्यूटेबल था, उसके लिए एक ही क्लास थी,
बट हमारे पास यहाँ इम्यूटेबल है, बट हमारे पास एक नहीं दो क्लासेस। वाई? अब ऐसा तो है नहीं कि सेम काम के लिए हम दो क्लासेस को यूज करेंगे, या सेम क्लास के लिए जावा ने दो क्लासेस बनाई है अलग अलग। नो, दिस इज लिटिल डिफरेंस। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। दोनों में क्या होता है? दिस इज लिटिल डिफरेंस। और डिफरेंस क्या होता है वो समझने के लिए हमें क्या काम करना होता है? पहले तो समझना है ये दोनों जो होते हैं वो कैसे होते हैं? म्यूटेबल टाइप के होते हैं। ठीक है ना? अगर ये म्यूटेबल टाइप के हैं तो क्वेश्चन आता है देन डिफरेंस क्या हुआ? म्यूटेबल का मतलब हुआ द चेंजेस हैपन इटसेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ? जो चेंजेस होंगे कहाँ होंगे? खुद में होंगे। एंड दैट्स व्हाई वी कैन से द चेंजेस हैपन इटसेल्फ। तो यहाँ पे जो भी चेंज होगा खुद के ही ऑब्जेक्ट में होगा। ठीक है ना? दिस इज फर्स्ट वन। अब डिफरेंस की बात करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर? सिर्फ एक डिफरेंस है, सिर्फ एक डिफरेंस है, ध्यान रखना। दिस इज थ्रेड सेव, नॉट थ्रेड। अब आई थिंक यू ऑल आर अवेयर अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रेड सेफ्टी एंड नॉट थ्रेड सेफ्टी। कोई ऐसा जिसको नहीं पता है कि हम थ्रेड सेफ किसे कहते हैं, नॉट थ्रेड सेफ क्या होता है? सबको पता है ना थ्रेड सेफ क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्रेड सेफ्टी? नहीं पता। ओके, नहीं पता तो आई कैन जस्ट टेल यू, और वो पॉइंट आप आराम से समझना। देखो, जब भी हम बात करते हैं किसी चीज की थ्रेड सेफ्टी, जब भी हम बात करते हैं किसकी? थ्रेड सेफ्टी की, इट मीन्स दैट कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किस कॉन्सेप्ट की? हम बात करते हैं यहाँ पे कि हाउ द कोड इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूट। जब दो थ्रेड्स के बीच में या एक से ज्यादा थ्रेड्स के बीच में एक रेस लगती है किसी भी रिसोर्स को गेट करने के लिए, ठीक है ना? तो वहां पे एक पॉसिबिलिटी आ सकती है, दैट इज नोन एज द अ डेड लॉक सिचुएशन। कौन सी कंडीशन आ सकती है? डेड लॉक कंडीशन बन सकती है। और जब डेड लॉक कंडीशन बनती है तो उस कंडीशन में क्या होता है? आपका प्रोग्राम कह सकते हो एक तरीके से किस मोड में चला जाता है? एक्टिव मोड में? नो, यानी योर प्रोग्राम कैन फेस अ प्रॉब्लम नाउ। So that's why we can use the concept of thread safety. डेडलॉक कंडीशन को अवॉइड करने के लिए हम अपने प्रोग्राम को कैसा बनाते हैं? थ्रेड सेफ बनाते हैं। We will make your program will be a thread safe if you want to avoid the deadlock situation. And I hope so deadlock situation सबने सुना। ठीक है ना? तो डेडलॉक की जो सिचुएशन होती है उसी को अवॉइड करने के लिए हम प्रोग्राम को कैसा बनाते हैं? थ्रेड सेफ बनाते हैं। और थ्रेड सेफ बनाने को एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट और भी कहा जाता है, रिमूविंग द रेस कंडीशन बिटवीन टू थ्रेड्स। यानी दो थ्रेड्स के बीच में रेस को रिमूव करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? वी कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रेड सेफ्टी। वी कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रेड सेफ्टी। क्लियर सभी? कोई पॉइंट? तो यानी जो स्ट्रिंग बफर है और स्ट्रिंग बिल्डर इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक डिफरेंस है। दोनों म्यूटेबल टाइप के हैं। One is a thread safe and string buffer is thread safe and string builder is not a thread safe. Now, अब एक क्वेश्चन है from all of you. Which one is faster?
string buffer or string builder, which one is faster? String buffer is faster. Why? देखो एक चीज ध्यान रखना कि जब हम बात करते हैं कि विच इज द फास्टर, तो वी कैन नॉर्मली से दैट string builder is always a faster. String builder is always faster. क्या होता है? स्ट्रिंग बिल्डर फास्ट होता है। कैसे? अब उसका रीजन समझने के लिए आप कुछ ऐसा समझ सकते हो, अगर आपको एक, आप सब लोग एक क्लास में बैठे हुए हो और आपको थ्रेड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर निकाला जाए, तो आई थिंक आपको क्लास से बाहर निकलने में 2 3 से 4 मिनट लगेंगे। बट अगर आप नॉट थ्रेड सेफ कंडीशन में बाहर निकलोगे तो क्या होगा? शायद 1 से 1.5 मिनट में एवरीवन इज आउटसाइड। हाँ, कभी प्रॉब्लम हो सकती है, समझना, कभी भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कभी वाली प्रॉब्लम जो आती है, तो वो जहां पे जरूरी होती है वहां पे हम थ्रेड सेफ्टी को ही अप्लाई करते हैं। जैसे कभी भी ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं उन्हें थ्रेड सेफ ही रखा जाता है। क्या होता है? जब कभी ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो उसे हम कैसे रखते हैं? थ्रेड सेफ रखते हैं, क्योंकि वहां पे स्पीड उतना मैटर नहीं करता। उस समय हमें मेन चीज क्या चाहिए होती है? वी रिक्वायर द प्रॉपर रिजल्ट। तो जहाँ सिक्योरिटी इश्यूज ऐसे नहीं है, तो हम वहां पे क्या यूज कर सकते हैं? देन वी कैन गो फॉर द दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो हम बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझेंगे स्ट्रिंग बफर का, ठीक है ना। विच कॉन्सेप्ट वी कैन अंडरस्टैंड? अ स्ट्रिंग बफर। क्लियर है सभी को इतना पॉइंट्स? So now we can come back there और हम यहाँ पे प्रोग्राम बनाते हैं। What's the program we can make again? यहाँ पे हम एक और नया प्रोग्राम बनाते हैं, str buff demo न्यू क्लास, और इसका नाम रख दिया हमने str public static void main and finish। तो देखो एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी हम स्ट्रिंग बफर या स्ट्रिंग बिल्डर यूज करते हैं, हमेशा एक ही तरीका से क्रिएट करने का। ओनली वन वे इज देयर। अब क्वेश्चन आता है व्हाट दैट वे? वी आर यूज टू स्ट्रिंग बफर fb equal to new string buffer। Delhi can create another object, copy this, यहाँ पे हमें क्या काम करना है? वी कैन से fb1, this is your fb1 and something like this, this is fb2, ठीक है ना। तो हम हमेशा क्या कर रहे हैं? एक नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है ना। वी आर क्रिएटिंग द न्यू ऑब्जेक्ट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू, क्योंकि स्ट्रिंग बफर ये हो बनाना हो या स्ट्रिंग बिल्डर, वी ऑलवेज रिक्वायर्ड अ विच फंक्शन? अ न्यू कीवर्ड। इसकी जरूरत होती है हमें? न्यू कीवर्ड्स की जरूरत होती है, जो हमने यहाँ पे यूज कर दिया, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट सिस्टम डॉट आउट डॉट स्ट्रिंग,
New is a keyword. If you want to create any object, always you require to use. New is a keyword. New always create a new object. New always create a new object. That's why we have to use the concept of new. ठीक है ना? हमने यहाँ लिखा we have to write is what? SB equal to SB1. As well as we can write one more time, copy this. कब क्रिएट किया है आपने ऑब्जेक्ट? साकेत, when you have created the object without a new keyword. Yes, साकेत. मेरे हिसाब से अगर आपके पास क्लास नहीं है, दे आर नॉट एबल टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट. और बिना न्यू के कभी भी ऑब्जेक्ट क्रिएशन नहीं होते हैं. विदाउट न्यू कीवर्ड यू कैन नॉट क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट इन जावा. ठीक है ना? यानी जब भी आपको ऑब्जेक्ट क्रिएशन करना है, यू ऑलवेज रिक्वायर्ड टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू. नाउ इसका आउटपुट क्या होगा? व्हाट द आउटपुट ऑफ दिस वन? ट्रू एंड we have right two statements. So first is true, second is true. Okay. Anyone else? True, false? देखो बेसिकली एक चीज ध्यान रखना, हमें पता है जब दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं तो उनके रेफरेंस तो कभी सेम हो ही नहीं सकते. उनके रेफरेंस कभी भी सेम नहीं हो सकते. ठीक है ना? अब यहाँ पे क्या हुआ, SB2 में हमने SB1 का रेफरेंस दिया है एंड दैट इज अ ट्रू. ठीक है. पहला हमेशा क्या होगा? फॉल्स. और दूसरा हमेशा क्या हो जाएगा? तो वी कैन गेट द आउटपुट इज व्हाट? अ फॉल्स एंड. यानी हमें यहाँ पे आउटपुट मिलता है फॉल्स एंड ट्रू. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पहला रेफरेंस है, समझना, जो हमने बनाया है एस बी इक्वल टू समथिंग एंड देन SB1 इक्वल टू समथिंग. देखो दो ऑब्जेक्ट जब बनते हैं तो दो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस कभी भी सेम नहीं हो सकता. दो रेफरेंस का ऑब्जेक्ट कभी भी सेम नहीं होता. यानी दो का रेफरेंस है, समझना, आपने न्यू कीवर्ड यूज किया और अगर दो ऑब्जेक्ट बने तो उनका जो एड्रेस होगा वो सेम हो ही नहीं सकता. अलग अलग ही होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है. रेफरेंस. दैट्स इट. क्लियर सभी को इतने पॉइंट्स? दैट पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? ठीक है. अब अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, अब आप अगर यहाँ यूज करते हैं कॉन्सेप्ट इक्वल्स का, क्या यूज करते हैं? वी कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल्स. तो कैसे लिखते हैं इक्वल्स? सीधे we can write like this: SB dot equals S.
and now what is the output? अब आउटपुट क्या होगा? ट्रू 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 ट्रू, ठीक है ना? ओके चलो अब एक क्वेश्चन, ये जो इक्वल फंक्शन है किस क्लास का फंक्शन है? बेसिकली दैट इक्वल फंक्शन बेसिकली बिलोंग फ्रॉम विच क्लास? इट्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट क्लास, दैट वी नीड टू रिमेम्बर कि जो हमारा स्ट्रिंग क्लास होता है, सॉरी जो इक्वल फंक्शन होता है, ये किसका फंक्शन होता है? इक्वल्स इज बिलोंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट क्लास। और जब कोई फंक्शन ऑब्जेक्ट क्लास का है, यहाँ पे कोई ओवरराइडिंग नहीं की गई है, ध्यान रखना। यानी स्ट्रिंग बफर ने आपके इस इक्वल फंक्शन को ओवरराइड नहीं किया है, और जब उसने इसे ओवरराइड नहीं किया, इसका मतलब क्या हुआ? अब आप कुछ भी करो, इट विल नॉट गोइंग टू गिव द रिजल्ट इज ट्रू। यानी ये वही काम कर रहा है जो आपका डबल इक्वल टू कर रहा है। तो सी दैट अगेन यू कैन गेट द रिजल्ट इज फॉल्स एंड ट्रू। क्लियर? ठीक है ना? तो इसलिए क्या होता है यहाँ पे आउटपुट क्या मिलता है? फॉल्स एंड ट्रू ही मिलता है। Why we can say this is a false and true? The reason behind it is because क्योंकि यहाँ पे एक चीज हमें ध्यान रखनी होती है कि जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है? दोनों कॉन्सेप्ट एक ही है। यानी हम डबल इक्वल टू यूज कर रहे हैं तो भी रेफरेंस कंपैरिजन हो रहा है, और इक्वल फंक्शन यूज कर रहे हैं तब भी हमें रेफरेंस कंपैरिजन। क्लियर नाउ? क्योंकि
आपके स्ट्रिंग बफर ने इक्वल फंक्शन को ओवरराइड नहीं किया है। क्लियर ना? अगर मैं ये लिखता हूं sb1 डॉट अपेंड, Delhi is capital. That is the capital of India. Something like this. So now tell me, what is the output of this one? I'm asking for both of them. दोनों का आउटपुट क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। दिल्ली एंड दिल्ली क्या? ओके, देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, बोथ आर प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट। दोनों क्या प्रोड्यूस करेंगे? सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। हाउ यू कैन सी दैट? इसके पीछे रीजन क्या होता है, मैंने आपको एक ऑलरेडी वर्ड बता दिया कि नाउ योर स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर इज अ म्यूटेबल ऑब्जेक्ट। यानी अगर कोई भी चेंज होगा तो वो उसी में होगा, कभी भी कोई नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जाएगा। And that's why what we are getting? We are getting the similar object again and again. यानी we are getting the same value. जैसे ही आपने एक में चेंज किया, that will reflect to the other reference also. तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है ना? So अब किसी के माइंड में कोई क्वेरीज हैं तो you all can ask. Clear? So now this is a basically concept for the ठीक है ना? सो अब ये क्या सारे कॉन्सेप्ट, अब इसी के अंदर लेंथ फंक्शन होता है, इसी के अंदर बाकी सारे फंक्शंस होते हैं। बस यहाँ ध्यान रखना है कि जो इक्वल फंक्शन होता है, यहाँ इक्वल वो काम नहीं करता जो नॉर्मली हम सोचते हैं किसमें कर रहा है, दैट इज वर्क डूइंग द वर्क इन अनदर, यानी इन स्ट्रिंग क्लास। यानी जो स्ट्रिंग क्लास के अंदर फंक्शन काम कर रहा है वैसा कोई भी काम यहाँ पे अब नहीं हो रहा। So now after this we have to see another concept, and that concept is known as inner classes. What the concept we have to see? The concept of inner classes.
But before the using of the inner classes, we can see another concept that is known as the concept of interfaces. यानी अगर हमें इनर क्लासेस करना है काम, तो इनर क्लासेस से पहले हमें कौन सा कॉन्सेप्ट समझना होगा? वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग इंटरफेसेस, कि हाउ द इंटरफेसेस इज एक्चुअली वर्क, यानी हमारा इंटरफेस कैसे वर्क करता है, हाउ योर इंटरफेस इज वर्क। तो उस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा? वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट दैट इज हाउ वी कैन डू द वर्क यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ अदर। तो देखो यहाँ पे इंटरफेस के बारे में समझ लेना होगा। देखो अपने हम लोगों ने जब बात की थी इनहेरिटेंस की, इफ यू ऑल रिमेम्बर दैट, इनहेरिटेंस बेसिकली मैंने आपसे कहा था दिस इज 5 टाइप। जो हमारा इनहेरिटेंस होता है कितने टाइप का होता है बाय डिफॉल्ट? इट विल बी ऑफ 5 टाइप। योर इनहेरिटेंस विल बी ऑफ 5 टाइप, बट in Java we know that a multiple inheritance is not possible with the help of classes। तो यानी अगर आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव करना है तो हमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना होता है? वी हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेस। हमें इंटरफेस के कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ेगा। So now we can think that how we are going to use the concept of interfaces in your programming, यानी इंटरफेसेस का यूज हम अपनी प्रोग्रामिंग में कैसे करते हैं, गॉट इट? और उसके भी आपने प्रोग्राम समझना है एंड उसके बारे में समझना है इंटरफेसेस के बारे में। तो पहली डेफिनेशन जो इंटरफेसेस के बारे में पता होनी चाहिए वो ये होती है, इनसाइड द इंटरफेसेस all the function is by default public and abstract type. By default all the function inside the interfaces by default public and abstract. Public and abstract. Clear? Public and abstract, but यहाँ पे condition except static and default function, except static and default function, यानी static और default function को छोड़ के बाकी जितने भी functions होते हैं by default वो सारे के सारे क्या होते हैं? That will be a which type? That will be your in public and abstract type, except default and static function। यानी आपके पास इंफॉर्मेशन सारी है, what you have to understand कि how this interface is going to work। तो इंटरफेस की डेफिनेशन में एक चीज ध्यान रखनी है, all the function inside the interfaces will be your public and abstract except default and static। ये फीचर आपका जेडी के 8 ऑनवर्ड्स इंक्रीज किया गया है, ध्यान रखना। Screen is already shared, maybe your internet issues is there। Ablasha, okay, so what the things we have to understand? So basically what the things we need to remember कि जब हम इंटरफेस की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें ये पॉइंट्स अच्छे से पता होने चाहिए। क्या पॉइंट पता होना चाहिए? कि your interface can contain the information about a abstract function, that will be a which type? That will be a, we can say, a public and abstract type, otherwise it will be a default type also। तो यहाँ पे कैसे वर्क करता है ध्यान रखना। So now we can understand this concept again। So what we have to do, हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया है, यानी हम एक इंटरफेस बनाते हैं, राइट क्लिक न्यू। यस सरोज, देयर इज एन क्वेरी। We have not to create the class, we have to create is what? An interface।
इंटरफेस। तो इसका नाम हमने रख दिया एनिमल। ओके, नो इश्यूज। एंड ठीक है ना, ये फंक्शन बाय डिफॉल्ट कैसा है, पब्लिक टाइप का, यानी एक इंटरफेस कैसा है, पब्लिक टाइप का। नाउ वी कैन क्रिएट द टू मोर फंक्शन या थ्री मोर फंक्शन। ने फंक्शन बनाया वाइड टॉक एंड दैट्स, यानी अब अगर आप देखोगे इस फंक्शन को, बाय डिफॉल्ट इसका बिहेवियर किस टाइप का हो गया, पब्लिक एंड अब्स्ट्रैक्ट टाइप का। आपको पता है अगर आप अब्स्ट्रैक्ट क्लास में यही काम करते यू कैन गेट एन एरर। तो जावा में अगर आप इंटरफेस के अंदर कोई भी फंक्शन बिना बॉडी के भी लेफ्ट छोड़ते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है ना। ओके, नो इश्यूज। So now what we have to do the work again, we can do the work is, हमें यहाँ पे एक और फंक्शन बनाना है एंड दैट इज अ टाइप फंक्शन स्टैटिक वाइड, और यहाँ पे मैं कुछ मैसेज दे दिया समथिंग लाइक दिस, दिस वन अभिलाषा, then I'm just to use this one, after that I'm just using this scale। मैंने अभी एक्सप्लेनेशन कहीं कुछ और नहीं किया है। दिस वन इंटरफेस में मैंने कहीं लिखा नहीं है, ध्यान रखना, आई एम नॉट राइट एनीथिंग रिगार्डिंग इंटरफेसेस, वी हैव जस्ट डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेस। इंटरफेस की डेफिनेशन हमने ये कही थी, अंडरस्टैंड द पॉइंट अगेन, आप नोट करना हो, एनीवन इफ यू वांट यू कैन नोट डाउन। Interface, inside the interface all the function is public and abstract except default and static function। यानी इंटरफेस के अंदर सारे फंक्शन बाय डिफॉल्ट कैसे होते हैं, पब्लिक एंड abstract एक्सेप्ट डिफॉल्ट एंड स्टैटिक फंक्शन। अब अगर हमारा फंक्शन कोई डिफॉल्ट टाइप का, इसका मतलब क्या होता है, नाउ दैट फंक्शन इज एबल टू एक्सेस, हम उसे इनहेरिट कर सकते हैं। कैसे, अभी आगे समझते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने काम कर दिया एंड वी कैन पुट द मैसेज सिस्टम cancel, we have to just show the message, that's right। और हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, देखो अगर आप सिर्फ ऐसे लिखते हो वाइड, वी कैन राइट इज व्हाट, अस्लीप के बाद 8, समझना यहाँ पे। तो देखो ये आपको एरर जनरेट करना है, क्योंकि कोई भी फंक्शन आप इंटरफेस के अंदर ऐसे नॉर्मल नहीं बना सकते। और अगर हमने यहाँ पे यूज किया कॉन्सेप्ट कौन सा, इफ यू कैन यूज द सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, वी कैन राइट इज व्हाट, हम यहाँ लिख दें कैन ईट से। तो अब अगर इस एरर को रिमूव करना है तो हम यहाँ कैच कर देंगे, तो एरर रिमूव हो गई। So now that point is clear for everyone कि एक इंटरफेस के अंदर कैसे फंक्शन हो सकते हैं, या तो पब्लिक अब्स्ट्रैक्ट होंगे
या फिर डिफॉल्ट टाइप के होंगे, और या फिर वो फंक्शन कैसे होंगे, दैट मस्ट बी आर दिस टाइप। Yes, anyone have queries? ठीक, अब तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, अब वी हैव टू इम्प्लीमेंट दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। हमें क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना। कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके लिए हमने एक और क्लास बनाई, उसके क्लास का नेम रख दिया कैट। क्या नाम रख दिया, अ क्लास कैट। यहाँ मेन फंक्शन भी बनाना होगा। देखो यहाँ पे हम लिखते हैं इम्प्लीमेंट्स। इम्प्लीमेंट करना है, किसे करना है, वी कैन से एनीवन। देखो जैसे हमने उसे इम्प्लीमेंट किया, यू कैन सी यू आर गेटिंग एरर। हमें यहाँ पे एक एरर मिलती है। एरर इसलिए मिलती है क्योंकि जो हमारा इंटरफेस था उसके अंदर अब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस अवेलेबल थे। कैसे फंक्शंस अवेलेबल थे, अब्स्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अपने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करते हैं तो वी कैन गेट इन ट्रबल। कैसे प्रॉब्लम आएगी, वी ऑल नो दैट, वी ऑल नो। अब उसके पीछे एक रीजन क्या होता है कि वी हैव टू इम्प्लीमेंट दिस स्टफ। तो इम्प्लीमेंट करने का तरीका क्या होता है, गो टू दिस सेक्शन, एड एन इम्प्लीमेंटेड मेथड। आप एक ऐसे काम कर सकते हो, सीधे हमारे पास देखो फंक्शन ओवरराइड होके आ गया, और यहाँ पे हमने सिंपली उसकी डेफिनेशन दे दी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन, और यहाँ क्या पास कर देंगे, सिंपली से दैट yeah. तो एनीवन क्वेरीज कि हमने फंक्शन को ओवरराइड कर दिया। अब एक चीज दूसरी बात जो भी ध्यान रखनी है, हम कभी भी अपने इंटरफेस को इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, हम कभी भी अपने इंटरफेस को इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते। इंस्टेंशिएशन का मतलब होता है हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएशन नहीं कर सकते। व्हाट इट, यानी जो चीज इनकम्प्लीट है उसका ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाएंगे, दैट्स वी कैन से कैन नॉट इंस्टेंशिएट दैट, है ना। ये चीज ध्यान रखना। नाउ अब हमने डेफिनेशन दे दी, तो यहाँ क्या बनाना होगा, वी हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। क्या लिखोगे, कैट सी इक्वल टू न्यू कैट, और हमें यहाँ क्या लिखना है, ठीक है ना। और यहाँ लिख देंगे सी डॉट, देखो टॉकटिव कॉल कर लेंगे, सी डॉट we can call the default, that is your eat also there, as well as c dot sleep. You cannot call this one basically, क्योंकि इसके लिए हमें इंटरफेस का नेम ही यूज करना था। वी कैन यूज द एनिमल डॉट, क्योंकि जितने भी स्टैटिक फंक्शन होते हैं स्पेशली इंटरफेस टाइप,
we have to specify the interface name. तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, that class name and then that is. Now अगर आप इस प्रोग्राम को रन कराओगे, you can see that it will work. Clear? तो आप यहाँ चाहो, if you want, you can implement more than one interface. जब कॉमा लगाओ और second interface, that's not a problem. Clear? तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, that is known as the concept of interface. इसी सिंपल सा कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं इंटरफेस. देखो बहुत सारे वर्क हम नॉर्मली क्लासेस की हेल्प से नहीं कर सकते, वो काम हम किससे कर सकते हैं, वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस. वी कैन डू दिस वर्क विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस. क्लियर नाउ? So the people who coming late, basically आपको आगे चल के प्रॉब्लम्स होंगे, ये ध्यान रखना. So that way start coming at time. Start come online on time. देखो because this is not the basically a live thing. आप physically present नहीं हो, you all just present virtually. So that's why there is this time your focus is more required. So come on time. The people who are joining very late, it's a 1.5 hour session is going done, and then you are coming there. ठीक है ना? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है. So we can move ahead now. चलो अब समझते हैं जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट फोकस है, कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग इनर क्लासेस. क्या पढ़ना है हमें? वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर क्लास. तो देखो इनर क्लासेस आर टू टाइप. इनर क्लासेस कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप. मैं थोड़ा सा डायग्राम से बताता हूँ तो मे बी यू कैन गेट इट वेरी इजी. जो हमारा इनर क्लास होगा कितने टाइप के होंगे? टू टाइप के. ठीक है ना? तो फर्स्टली वी कैन क्रिएट लाइक दिस. ठीक है ना? जो फर्स्ट टाइप होता है उसे हम बोलते हैं स्टैटिक नेस्टेड क्लास. स्टैटिक नेस्टेड क्लासेस. ठीक है ना? और जो सेकंड होता है उसे हम बोलते हैं नॉन स्टैटिक नेस्टेड आर इनर क्लासेस. ये दो टाइप के वहां पर क्लासेस होती है. ठीक है ना? फर्स्ट इज स्टैटिक नेस्टेड क्लासेस, सेकंड इज नॉन स्टैटिक नेस्टेड आर इनर. नाउ क्वेश्चन अकर दैट कि जो हमारा नॉन स्टैटिक नेस्टेड आर इनर क्लासेस होते हैं ये फर्दर तीन कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं. ठीक है ना? कितने कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं? थ्री टाइप. फर्स्ट, ठीक है ना? नाउ वी कैन डू दिस वर्क अगेन.
जैसे छोटा बनाते हैं इसे, वी कैन सेट लाइक दिस। देखो बेसिकली क्या होता है कि इफ यू डू एनी काइंड ऑफ वर्किंग दिस, तो समझने के लिए देखो हम यहाँ पे कहते हैं, पहला आपको पता है स्टैटिक नेस्टेड क्लासेस, सेकंड इज नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास। अब यहाँ पे हम इसे बोलते हैं दैट इज नोन एज द फंक्शन ऑफ रेगुलर इनर क्लास। सेकंड इसे जो बोलते हैं दैट इज नोन एज मेथड लोकल इनर क्लास। और जो लास्ट होता है इसे हम बोलते हैं दैट वी कैन से एनॉनिमस इनर क्लास। क्या बोलते हैं हम इसे? एनॉनिमस इनर क्लास। क्लास, ठीक है ना। ये हमारा क्या होता है, दैट इज नोन एज द कॉन्सेप्ट ऑफ एनॉनिमस इनर क्लास। देखो इस क्लास का कुछ समझना, जब हम बात करते हैं नेस्टेड क्लासेस की, तो जो हमारा नेस्टेड या इनर क्लास होते हैं दो टाइप के होते हैं, स्टैटिक नेस्टेड क्लासेस, नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास। जो नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास होते हैं थ्री टाइप के होते हैं, रेगुलर इनर क्लास, मेथड लोकल इनर क्लास एंड एनॉनिमस इनर क्लास। अब फर्दर जो हम बात करते हैं यहाँ पे ध्यान रखें, फर्दर द थिंग्स वी कैन से इज व्हाट, अब फर्दर जो हम बात करते हैं किसकी, एनॉनिमस इनर क्लासेस की, ये भी हमारा थ्री टाइप्स के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स आर देयर? दैट इज अ टू टाइप। we can we can do the work like this। और ये हमारा तो यहाँ पे हम इसे बोलते हैं दैट्स कॉल्ड द anonymous implementation of specified interfaces। क्या बोलते हैं सबसे पहले, द फर्स्ट थिंग इज नोन एज anonymous सब क्लास ऑफ क्लास। और जो सेकंड चीज होती है उससे हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द कॉन्सेप्ट इज व्हाट, दैट वी कैन से anonymous implementation of इंटर। यानी अगर हमें कुछ भी पढ़ना है अबाउट द इनर क्लासेस, हमें इतनी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक, पहला क्या होता है, स्टैटिक नेस्टेड क्लासेस होते हैं वो कितने, और नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लासेस होते हैं। नॉन स्टैटिक नेस्टेड स्टैटिक नेस्टेड क्लास कितनी बात की होते हैं, थ्री टाइप, रेगुलर इनर क्लास, मेथड लोकल इनर क्लास एंड एनॉनिमस इनर क्लास। नाउ अब आपका एनॉर्मस सब क्लास होता है, क्लास एंड एनॉर्मस इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्पेसिफाइड इंटरफेसेस। एनॉर्मस इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्पेसिफाइड इंटरफेसेस, यानी अगर हमें कुछ ऐसा काम करना है देन हाउ वी कैन वर्क, दैट इज द वे। ये हमारे पास एक तरीका होता है जिसके बिहाफ पे कोई भी वर्क इंसान कर सकते हैं। गॉट इट? किसी की अपनी क्वेरी है तो पूछ सकता है ना। सबको इतने पॉइंट्स क्लियर है, कैसे काम करेगा दैट वी कैन सी ऑन लेटर ऑन।
Yes, anyone have queries? तो हमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करना है स्टैटिक नेस्टेड क्लासेस का। यानी हम जो कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करेंगे पढ़ेंगे उससे पहले क्या पढ़ना है कि स्टैटिक नेस्टेड क्लासेस क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिक नेस्टेड क्लासेस? Ramesh, what is that? That is your static nested classes now. So we have to begin with the which concept? Static nested classes now first. So देखो basically what is the purpose of creating a static nested classes? That point we have to understand. How we can manage? एक चीज जो ध्यान रखनी है, we can say you cannot make your outermost class will be your static type. क्या नहीं कर सकते? We cannot make your outermost class will be your static type. यानी जब भी हम वर्किंग करते हैं स्टैटिक में, हमें यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, हमारी कभी भी आउटर मोस्ट क्लास स्टैटिक नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? We cannot make your outermost class will be your static type. Means outermost class cannot be static. No. So we can move on for the first concept. हमने क्लास में outer and that we have not created the static type. Inside this we can create another class, a class, and that is your inner. Okay, and then we can create another class. After the inner we can say inner one, and we have to make this class the which type? We have to make that the static type. We have make this class of which type? We have to make this class the static type. I hope so you all note it down. That's why I can just clear this drawing. Clear. So what happens now? Understand? We have one class that is a non-static. Your outermost class cannot be static type. Means we cannot use this modifier at this place. See there. If I can write this, what we can do? See there. What's in there? Illegal modifier class outer. Only public, abstract, and final are permitted. Means we cannot use the static keyword with outermost class. हम outermost class के साथ क्या नहीं यूज कर सकते? We cannot use the static keyword.
किसी ने एक क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द आउटकम व्हेन वी डिफाइन द इनसाइड अ क्लास। देखो इसके दो तीन रीजन है। द फर्स्ट पार्ट इज हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। व्हाट वी कैन डू द वर्क इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या कर सकते हैं? वी कैन डिफरेंशिएट दैट कि दिस इज अ, इसकी इंफॉर्मेशन ये काम करेगा, इस पे काम ये करेगा। इवन एक पॉइंट बताना, in a home, why we can make the things in a separate. Kitchen is alone, the drawing room is alone, we have a bedroom, and then we have a dining room, everything. Why we can differentiate all of them? Yes, Kisan. Briefly. Mhm. Why we do this? देखो बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे एक चीज लिखी हुई है कंपैटिबिलिटी, they have now compatibility. If you want to do this work, you have to go there. If you want to do this work, you have to go there. Okay, it's a part of class, but there's another class, another class. So what the means this, you can get the things very easily. Okay. Second thing, we will make the things secure also. हम एक तरीके से चीजों को क्या कर सकते हैं, सिक्योर भी और कर जाएं। Why we are working on the multi level of classing? अब अगर आपके साथ नेस्टेड क्लासेस में कोई वैल्यू है तो यू कैन नॉट एक्सेस डायरेक्टली। आपको पहले एक क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, फिर दूसरी क्लास का, एंड देन यू आर एबल टू एक्सेस दैट। जैसे आप एक कॉन्सेप्ट समझते हो ना, सुनते हो कि कॉन्सेप्ट ऑफ वन लेयर सिक्योरिटी, टू लेयर सिक्योरिटी, थ्री लेयर सिक्योरिटी। वाई? कि अगर पहला कोई ब्रिज भी कर गया तो दूसरे में ना पहुंच पाए, और दूसरा ब्रिज किया तो तीसरे से उसे रोक लेगा। तो मीन एज मच लेयर ऑफ सिक्योरिटी यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट, दैट इज योर टास्क। बट यहाँ पे प्रोग्रामिंग में व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट इज नेस्टेड क्लासेस, तो इसका मतलब होता है कि हर फंक्शन की डेफिनेशन अलग अलग क्लासेस में दी जा सकती है, एंड दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज अ बेटर अप्रोच। That's why that is always a better approach to form the good task. And that's why हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, we can use the concept of inner classes. तो जो static inner classes है आप एंड्रॉइड में पहले ही फेस करोगे। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एंड्रॉइड के अंदर एक फाइल होती है, दैट नेम इज r.java। क्या नाम होती है दैट फाइल नेम इज r.java। So when you have r.java, then you are able to get it. ओके, तो वहां पे आपको इसका क्लेरिफिकेशन बहुत अच्छे से मिल जाएगा। व्हाई वी इट विल बी गिव यू द बेनिफिट। So that's why you must need to aware about that. A class, inside the class we have a outer. The outer class के अंदर we have a static class, that is the inner, and then we have another static class, that is inner one. Now we can create another thing is new a class. What's the name we can give? We can give the name is तो सबसे पहले काम हमें यहाँ करना है, we can create as a function void
So now what we have to focus is there. Understand point now there. Basically, you would need to understand one more point is there. When you're talking about the concept of static nested classes. So in static nested classes, the inner class cannot access outer class outer class members directly. What you need to understand? The inner class cannot access outer class members directly. Object is required. What is required? Object is required. The question अगर नहीं समझ में आता, I can just tell you something like this. If I can make it something like this, int I equal to 10, suppose that. This is the outer value. And we want to access this from this place. If we can say so plus I, you can see you can get an error. You can get an error. Why we can get an error? The reason behind it is because we cannot inherit this. Means we are not getting this. A question at the why. Why we are not able to access this? The reason behind is this object, this instance variable cannot get a memory. यानी इस ऑब्जेक्ट को या इस जो हमारा एट्रीब्यूट है इसको मेमोरी तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट का क्रिएशन नहीं करते. So that's what I am told you that inner class cannot access outer class members directly. यानी जो inner class है वो outer class members को directly access नहीं कर सकते. Why? That is the basic reason that we can understand from this place. Now we have to create the object. You can see you are getting an error. So I can just show you from this. But if you write like this, if you make the thing is a static int j equal to 20, and if you want to access this member, then that is a access bit. Why that is accessible? That I can just tell you later on. Basically, just need to remember one thing. जब भी कुछ बात की जाती है कि how we are not able to access anything, object is required. That time we are talking about only non-static data members. That time we are talking about what? A non-static data member. We are not talking about the concept of static data member. क्योंकि आपके पास एक information होगी, I think you all know that static data members या static members get the memory when the class is loaded. Static get the memory when the class is loaded. यानी जो हमारे static होते हैं वो उसे memory कब मिलती है जब आपकी class load होती है memory में. But non-static get the memory when the object is created. A non-static can get the memory when the object is created. Yes. Any queries, anyone? No. Okay. So what the condition we have to remember that when you talk about a non-static get a memory when the class is loaded, and a static members get the memory when the class is loaded. Sorry, non-static can get a memory when the object is created, and a static can get the memory when class is loaded in memory. So that's it. You can see there. That's fine. Now, we come in a mind ki how we can call this function. We want to call this function from this place.
तो हाउ वी कांट कॉल, तो उसके लिए पहले सबसे पहला रीजन होता है वी हैव टू रिक्वायर द आउटर डॉट. Which class we want to inherit? Reference inner. And inside the inner, we have the inner one, so we can call this also. OB equal to new. We can again use the outer, but we are not going to create the object of outer class. We require the object of which class? Inner and dot inner 2. So now what we are doing, we are creating an object of a inner one class. Means we are creating an object of this class. And now if you want to access this, you can just use the concept is what? A simply ob dot set. Now if you run this, that program is going to do. Clear? तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, this OB can only invoke the function that is present inside the outer class. It will only invoke a which function that is present in inner one class. If you have any function inside the inner class, something like this, void get data. And if you think you want to invoke this, get data. From get data. So now what happens, if you want to invoke this, you are not getting to call. Why? It will generate the errors simply. There is no function with this name. Now question आता है, why we are not getting this one? And why we are not able to access this value inside the inner class? देखो अब क्वेश्चन समझने के लिए यहीं पे आपको बहुत अच्छे से समझना होगा कि ये जो आई है, why we are not able to access this I is there. हमें जे तो एक्सेसिबिलिटी मिल रही है बट आई की नहीं मिल रही. तो अगर आपको एक रिमेंबर हो, दिस इज योर कैसा डेटा मेंबर है? नॉन स्टैटिक डेटा गेट मेमोरी व्हेन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड. ठीक है ना? And this is your static data member get memory when the class is loaded. क्लियर सभी के अंदर? ये पॉइंट सारे क्लियर है कि हमें जो स्टैटिक होता है उससे मेमोरी कब मिलती है और नॉन स्टैटिक से मेमोरी कब मिलती है. You can get a memory when the class is loaded. You can get a memory when the object is created. तो देखो मेमोरी में तो ये लोड हो रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस, बट इसका ऑब्जेक्ट क्रिएशन नहीं हो रहा है एंड दैट्स व्हाई हम आई को एक्सेस नहीं कर सकते इनसाइड दिस. एंड दैट्स व्हाई आपसे कहा जाता है inner class required to access the outer class, sorry, inner class cannot access outer class member directly. Object is required. तो कैसे काम होता है? And then you can use it the plus now you can get the both the value. We have to run this. Run now. Now all these points are clear for everyone? Still there is a confusion?
Still, if anyone have any confusion, you all can ask. No queries? All these points are clear? Now, अब एक कॉन्सेप्ट आप सुनते हो आप सभी लोग, ठीक है ना? आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट. How many people is aware about the concept of event handling? इन लोग को पता है व्हाट द इवेंट हैंडलिंग? इवेंट हैंडलिंग क्या होती है? नेक्स्ट मंथ. I'm asking you how many people have listened this word, event handling, yeah, something like this. I'm not talking programmatically, Tushar. I'm just asking in general. Event handling. Kishan, in your college, either university, there's also an event is always happening. Yes or no? So उससे भी तो कोई हैंडल करता है. That is the what? Event handling. वो भी तो एक इवेंट हैंडलिंग है. बट अगर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, उस इवेंट को करने के पीछे हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर कि वो इवेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं? Now understand, basically, when you're doing any kind of event, if you're doing the any kind of event, we majorly require the three things. The first thing is event. Okay. Second is where the event is happened. यानी event किसी को हम बोल सकते हैं event. And the last point is its listener. यानी you can say event listener. देखो किसी चीज को सक्सेसफुल कब माना जाता है? when we have a listeners. when we have a listeners. अगर हमारे पास लिसनर्स नहीं है तो आप किसी भी इवेंट को कराते हो कोई फायदा नहीं है. आपने बहुत अच्छा सब कुछ किया, यू कैन मैनेज एवरीथिंग, बट देयर इज नो लिसनर. इज योर इवेंट इज सक्सेसफुल? फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू इज नो. क्योंकि इवेंट हम किसके लिए करते हैं? फॉर द लिसनर्स, कि लोग आएंगे देखेंगे, एंड दैट्स व्हाई इवेंट इज ऑलवेज मोटिव ऑफ दिस. तो जब भी हम कोई इवेंट हैंडते हैं, इवेंट हैंडलिंग इसीलिए बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. व्हाट इज इवेंट? हम इवेंट किस टाइप का कराते हैं. So what happens in this, if you're doing any kind of event, suppose that one event you can organize in a village, but you know that the people are not aware about that concept.
वो इवेंट कभी भी वहाँ सक्सेसफुल नहीं हो सकता. But if you go with some kind of other things or some other ideas, so maybe that event is going to be successful. That's why this is a concept that we have to use in Android. हम यही तीन कॉन्सेप्ट कहाँ यूज करते हैं? एंड्रॉयड में यूज करते हैं. और एंड्रॉयड, अब क्वेश्चन आता है एंड्रॉयड में अगर हम ये काम यूज करते हैं तो व्हाई वी आर अंडरस्टैंडिंग राइट नाउ दिस पॉइंट. रीजन है क्योंकि हम कॉन्सेप्ट नाउ पढ़ने जा रहे हैं इनर क्लासेस का, यानी रेगुलर इनर क्लासेस. और जो हम बात करते हैं रेगुलर इनर क्लासेस का, उसमें सिंपल सा मतलब ये होता है, सिंपल सा मतलब क्या होता है कि अगर हम कोई भी वर्किंग परफॉर्म कर रहे हैं इनर क्लासेस, समथिंग लाइक दिस, if you perform something, so what's the need we need to understand? Inner class is a concept where we can say event handling. यानी आपको कभी भी इवेंट हैंडलिंग करनी है, we always require these classes. Which classes we require? Event handling. For the event handling, we always require the use of inner classes. तो इनर क्लासेस में हमने थ्री टाइप्स ऑफ इनर क्लासेस पढ़ा है. दैट इज द नॉन स्टैटिक. स्टैटिक वन टाइम था, वो हमने देख लिया. Now we have to discuss about the inner classes. That is a different type. That means the first type, and that is known as the regular inner classes. हमें क्या समझना है? We have to see the concept of regular inner classes. Clear? So अब क्वेश्चन आता है how we can learn with the help of a regular inner classes. So what we can do? See then, I'm just not going to do lot of changes. We already have a concept. So first, if you want, you can take the snapshot of this. Then we can take the then we can make it a regular inner classes. Take the snapshot of this program. Yes. Done this work? Okay. So now I can remove this static concept. Got it? So what we have to do now, we can remove the static and I can remove the static. So to see the difference. When you remove the difference, now what happens? We can say now inner class can access outer class members directly. Now inner class can access your outer class members directly. That means what?
Got it? So for that purpose, what we can do the work, we can make it changes. If you remove this section, no object is required. We can just call this o dot I. We require to call this. Similarly, here we have to make the changes. Now, every class is a non-static type, so we must need to create an object of each class. We can do the working like this. Yes, any queries? देखो अब समझना है यहाँ पे. Now we are creating a every class object, a new outer, new inner, and then we are accessing the new inner one. So what happens if you want to access this? What happens? This object will be created, so that's why we are able to get this variable. This object is created, that's why we are also able to get this variable as so on. तो यहाँ पे अगर आप देखो, we can get this one concept. हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. We are accessing the data without any object, and that is the concept of a regular inner class. So that we can say that is known as the concept of regular inner class. Also, we have to understand one more concept. Suppose that this is in this place there is also int I equal to 30. There's an int I equal to 40, and we can say int I equal to. Now tell me, what is the output is printed now? I की वैल्यू क्या होगी? What's the value of I? 50. Okay. Suppose that we want to access 40. Can we access in so function? We want to access the 40. Can we access? Yes. How Asif? Now, how we can access that I can tell you, and that is one of the most important thing in your this concept. So what we have to do, if you want to access this member of 40, we have to use the concept is like this. We can use it the concept. We have to use it the this dot I. What we have to use the concept of this dot I, and this represent a current object value. जो हमारा this होता है क्या काम करता है? This reference ये जो होता है वो किसे रिप्रेजेंट करता है? That will represent a current object value. किसे रिप्रेजेंट करता है ये? Current object value. क्लियर?
यानी जो दिस है, दिस हमें क्या देता है, दिस ऑलवेज प्रोवाइड यू द बेनिफिट ऑफ करंट ऑब्जेक्ट वैल्यू। यानी जो करंट ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू है उन्हें एक्सेस करने का काम कौन करके हमें देता है, आउट दिस। क्लियर, this point is clear. This is always what, this will give you the current object value। तो करंट ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, इनर वन का। तो इनर वन की करंट ऑब्जेक्ट में कौन सी वैल्यू है, दैट इज I इक्वल टू 40 एंड दैट्स वी आर एबल टू गेट दिस डॉट I से कभी भी 50 नहीं मिलेगा, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। बट I से we can get a 40 as well as we can get the 50 both। if this is no this variable then you can get from this value, and अगर यहाँ पे ये वैल्यू नहीं होती है तो हमें ये मिलती है, और अगर यहाँ पे ये है then we have to use the concept of this dot I। so this dot I always denotes the instance member value। clear? now if I ask with you, we want to access here the 30 also, हमें 30 भी access करना है, if there is any way we can access this, we also again say yes, because every object is created there, that's why we not get any kind of problem। so copy and paste, what we have to do the work, we have to use the concept of inner dot this dot I, as well as we can use this concept more, and यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं outer dot this dot I, means we are accessing now every member that is in class। ठीक है, so you're getting the 50, 40, 30 and 10, so see from this way। so now if you're doing any kind of work there, आप कुछ भी काम करते हो, it's not a problem, but what I told you that inner class can access outer class members directly। तो आप समझना, जितने भी आप चैट क्लाइंट एप्लीकेशन देखते हो या जितने भी आप इवेंट बेस्ड एप्लीकेशन देखते हो, वो सभी एक तरीके से वर्क करते हैं ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर क्लास। सभी किससे वर्क करते हैं, दैट विल बी वर्क ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर क्लासेस। क्लियर सभी को, दिस पॉइंट्स आर क्लियर, यस और नो? द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज क्लियर फॉर एवरीवन? So now, second concept. हम एक second concept समझना है. We have to understand the second concept, and that concept is what? ये तो हमारा था this called the regular inner class। इसे हम क्या कह सकते हैं? That is known as the concept of regular inner class। ठीक है ना? अब क्वेश्चन आता है, we have to discuss some other type। तो जो सेकेंड टाइप हमने पढ़ा था या डिस्कस किया था, दैट इज व्हाट, अ मेथड लोकल इनर क्लास। व्हाट थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड? अ मेथड लोकल इनर क्लास। क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेथड लोकल इनर क्लास? व्हाट द मीनिंग ऑफ मेथड लोकल इनर क्लास? So for that purpose, what we have to do, we can do another thing. Save this, come back there, and we can create a right click new and create a new Java class।
So we can give its name is out demo, and we are not going to create an object and also finish this. Inside the out demo, what we have to understand that we need to focus. What I am told you that a method local inner class. What we have to discuss? A method local inner class. So for that purpose, we can understand a why. So this is a one method. अभी तक आपने जो concept पढ़ा, a class contain a class. But now there's a concept, a class contain a method, and that method contain a class. That method contain a class. तो हमने यहाँ पे click a class A, something like this. And here I can say why greeting and something like this. And again we can say system.out.println from greeting. Okay, so now what we have to understand that we have a one function. We have a one function that name is a white show. And inside this, we have one a class that name is a class A. So what the point we need to remember, this is a local class. This is a local class. Why we are saying this is a local class? Why we can say this is a local class? The reason behind it is because of what? When you're doing the working, यहाँ पे चीज ध्यान रखना है. Why we can say this is a local? Because the part of a function. That's a part of function, and we all know that the things that is present in a function that we cannot access outside the function. यानी अगर कोई चीज फंक्शन के अंदर है तो हम कभी भी फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते. अगर कोई चीज क्लास के अंदर है तो उसे हम विद इन अ क्लास भी एक्सेस कर सकते हैं, and we are able to access that thing outside the class as well. So now the question is how we can work on this. So basically, when we have a concept about this, now question coming back, how we can create the object. So for that person, we have to use the concept of new A. The object is created and dot greeting. And यहाँ पे हमने एक सिंपल सा मैसेज रखा, समझना है a system dot out dot print hello. और इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं, we can say here we can pass as what from. So now what the things we need to understand there, basically we can create the object of which class? Out demo. Understand the out demo. OBO equal to OB1 equal to new out demo. We can do this work. And after this, if we can call OB1 dot so, see there, we are calling a which function? Because user is calling only so function. User is only calling the so function, but you can see another function with the name is greeting is invoked automatically, and that type of function is known as a callback function. Yani this type of function is known as a callback function. Or Android, we are going to see this type of function lot. यानी एंड्रॉइड के अंदर जितने भी हम फंक्शन देखते हैं बाय डिफॉल्ट कैसे होते जाता है, दे आर द कॉल बैक टाइप फंक्शन. दे आर बेसिकली नोन एज व्हिच टाइप ऑफ फंक्शन? कॉल बैक टाइप फंक्शन. मींस अगर हम एक काम कर रहे हैं उसके लिए हमने एक चीज एक फंक्शन कॉल किया तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर जितने भी अनदर फंक्शन होंगे दे विल बी इन्वोक ऑटोमेटिकली, चाहे वो एक्टिविटी की लाइफ साइकिल हो, चाहे एप्लीकेशन की लाइफ साइकिल हो. There is a lot of callback type function. Callback means जो खुद को अपने आप invoke करा सकता है. That's a callback.
तो यहाँ देखो हमें यहाँ पे भी क्या हो गया, वी आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी हमने स्लो फंक्शन कॉल किया बट विच फंक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली, यू कैन सी द greeting is also executed automatically. You cannot create this concept at this position, हम यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि जब तक आप ये क्लास जनरेट नहीं होगी तब तक यू आर नॉट एबल टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, दैट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट इज नोन एज अ कॉल बैक फंक्शन। क्लियर? नाउ we can do one more concept. If we can say here, we can use the int I equal to 30. Understand the points. I equal to 30. And if you want to access from this place, we can access it also. There is a no problem. So see there, it will be work again. We're getting the 30. But if you want to make the changes, see there, if you want to route like this, I equal to 50, this will generate an error. This will generate an, अब इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक ये है, आपको पॉइंट ध्यान रखना है, योर मेथड लोकल इन द क्लास कैन नॉट एक्सेस can access a local member, but that will be treated like a public static and final type. यानी जो हमारा वेरिएबल होता है बाय डिफॉल्ट कैसा ट्रीट होता है, दिस विल बी ट्रीटेड लाइक अ फाइनल टाइप। यानी जो हमारा इंट आई इक्वल टू 30 वो कैसा ट्रीट किया जाएगा, एज अ फाइनल, अगर उसे आप एक्सेस करते हो कहां पे, इनसाइड द मैथड, इनसाइड द मैथड लोकल क्लास। बट इट आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इफ यू वांट यू कैन एक्सेस इट, यू कैन यूज इट, आप ये सारे काम करना चाहो तो कर सकते हो, देयर इज नो एनी इशू। बट व्हाट द पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड, इफ यू यूज लाइक दिस, then that means अगर आपने इसे यहाँ यूज कर लिया तो इस जो इसका वेरिएबल की जो प्रॉपर्टी वो कैसे शो करने लगेगी, इट विल बी वर्क लाइक अ फाइनल टाइप। कैसे वर्क करेगा, फाइनल टाइप वर्क करेगा। So now all these points are clear for everyone. Yes, anyone have queries? Final means we cannot modify the value, Saket. If anything is final, it means we cannot make any changes in this variable mode. Constant word सुना है? Saket, do you listen the word of constant? Constant and final दोनों सेम होते हैं, ठीक है ना। जावा में कॉन्स्ट कीवर्ड तो है बट हम उसे यूज नहीं करते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट डिक्लेयर करने के लिए हम फाइनल यूज करते हैं, ठीक है ना। हाँ एक चीज और, इंटरफेस के अंदर भी अगर कोई मेंबर है यानी वेरिएबल है तो वो भी बाय डिफॉल्ट होता है पब्लिक स्टैटिक एंड फाइनल। इफ यू रिमेंबर दैट इनसाइड, if you define any variable like this, see there, if I can define like this, int I equal to 30, तो ये भी जो मेंबर होता है बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट पब्लिक स्टैटिक एंड फाइनल। see there, कैसे, if you want to make the changes inside this, so that is cat.java. if you want to access this, I can just put as what, मैंने यहाँ लिख दिया I, so this is no problem, you are able to access it.
First we can clear the drawing. We are not saving, that's why you're getting another. Save for this, now you are able to get this. Okay, so now if you run this, you can get an output. See there, there's no problem. बट अगर आप सोचो कि मैं यहाँ पे आई की वैल्यू को मॉडिफाई कर रही हूँ, कैन नॉट गेट अ हेल्प, तो आपको यहाँ पे एरर मिलती रहेगी। क्यों? क्योंकि यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ दिस आई, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट क्या है, अ फाइनल टाइप। सीधे वो खुद कह रहा है कैन नॉट बी असाइन, और असाइन नहीं किया सकता, इसका मतलब सिंपली क्या हो गया कि वो वेरिएबल कैसा है, ऑलरेडी फाइनल है, दैट्स व्हाई हम उसको कोई भी न्यू वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। वैसे यहाँ पे ये ट्रीट होता है फाइनल की तरह, इट विल बी ट्रीटेड लाइक अ फाइनल, इट विल बी अ फाइनल, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और अगर फाइनल है तो मींस वी आर नॉट गोइंग टू मेक एनी काइंड ऑफ चेंजेस देयर, हम उसमें कोई भी चेंज परफॉर्म नहीं कर सकते। यस, नाउ स्टिल इन योर क्वेरीज? यस, किसी के मन में कोई क्वेरी है तो पूछ सकता है। नाउ इतने पॉइंट्स? नो। यस किशन, आज बेसिकली basically firstly I can tell you the Kishan, Kishan, just understand, we are using plus I means we are concatenating two things, हम यहाँ पे दो चीजों को concat कर रहे हैं, that's why we using the plus I, ठीक है ना? अगर आप इधर लगाते हो तो प्लस आई इधर लग जाता है, दैट इज द ओनली डिफरेंस। गॉट इट? वी आर कॉन्कैटनेटिंग अ स्ट्रिंग वैल्यू, यानी स्ट्रिंग वैल्यू को कॉन्कैट करके हम ऐड कर रहे हैं, दैट्स व्हाई हम ये यूज कर रहे हैं, ठीक है ना? अब क्वेश्चन है हाउ टू एक्सेस रन वन फाइल प्रोग्राम टू अनदर फाइल। तो देखो मैं जितना भी कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ आशीष, मैं वही रूल फॉलो कर रहा हूँ। मैंने कहीं भी क्लासेस की अलग अलग कॉपीज बनाई है, हर क्लासेस की अलग कॉपीज, एक्सेप्ट द इनर क्लासेस, एक्सेप्ट द इनर क्लासेस। तो आपको इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन करने का, और जिस फंक्शन के अंदर मेन हो वहां से यू कैन कॉल एनी क्लास, दैट इज नॉट मैटर what you have written inside this, but that must be accessible, यानी उसकी एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, तो आप प्रोग्राम कहीं से भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। व्हाट इट आसीस? और कोई क्वेरी किसी की? ठीक है, so the people who have not joined the group, they can join the group and okay, just wait, I can just share it, just wait, give me a 1 minute. Now you all can join the group using this link.
Okay, so remaining information, if you can have any information that you can get receive at the group. Okay, so bye bye all of you.